So the comprehensive mains test programs for the Civil Services Examination OCS mains 2023 of 250 marks and date is 5/1/2025. So the fast questions of the American discussion, this would be the discussion session where because as I promised you, ways of promised you that we will have the test discussion. Also, the model answer has been also already circulated, and the copy will be evaluated within the 5 days, working days, right? Discussion हम देखिबा and the fast copy, fast test जो मैंने copy देइथिल offline, they are checked. You can collect from the office. The test, this will be the second test. Test number main test or second हम देखिबा with respect to geography. The first question is discuss the benefit of precision farming in horticulture and challenges in horticulture, right? Challenges of precision farming. So basically that means जदि आमे देखिबा basically horticulture कथा से कहूची कि precision farming रो horticulture कोन आंते. See what is about the horticulture. Horticulture means जो vegetables वगैरह ताको हम कहूचे horticulture. Then आमे जेतल कहूचे precision farming means what? Simple precision farming is a method of what I will say farming. जो थ्रे में we will have optimum use of, that means I would say optimum use of resources. Optimum use of resources. For example, कौनसी गोटे क्षेत्र सपोज भाबो कि 10 kg रो यूरिया लगुथला आगे precision farming हवा द्वारा सेटा 6 kg हे जे पारे, so you will save 4 kg. So this is how, that means we are precising, we are doing what precise in case of fertilizer. सेमति हम कहउचे irrigation रे, let's say हमरो total जति कि irrigation होची जदि हम ताके precision करि परिबा or minimize करिबा extra resource सेमति यूज न हो, that will be the precision farming. That means precision farming रे बे भाबो to precise something को हमें जितने precise करिया पे चाहूचे, that means ताकि हमको कौन करे, you have to use the technology. Simple, that would be IoTs. Simple, it will be what IoTs. That would be, I would say, IoTs. The simple हमें ताको कौन कहबा, it would be use of IoTs, use of AI, use of blockchain, use of how कौन कर परियो तमे drones, use of what drones, so use of GIS, there would be also geographical information system, then other technologies. So these are the technology will lead to which precision, that means precision farming. The precision farming पे कौन दरकार technology. So these are the technologies need, अर्थात ये technology की यूज करी हमें resource को proper यूज करके optimum and maximum utilization मध्य हमें कर परिवा. Then benefits ताली कौन, ताली fast benefits already हम एठू जानी गले, that will lead to the reduction of extra resource use. जेमति कि हमें आगे flood irrigation करूतले, एबे drip irrigation आसिकला, sprinkle irrigation आसिकला, तातर हमें water को save करी पारुछ. The precision farming रो जेतला हमें कहिबा कोन, simple हमें कहिबा precision farming रे कोन हिथाय कि there would be what saving of resource को हमें save करी परिबा. We will be able to save the resource को हमें कोन करि परिबा, save करी परिबा, right? देखो जो horticulture, that means vegetable वगैरह हमें कहि परिबा, तो precision farming in horticulture. Okay, benefits कोन मते आगे कि benefits हमें देखली कोन, income बढ़िबो, how कोन हबो, anyone, what will be the benefits कोन. एक तो देखो हमरो जो cost of input, हमें जो input cost will reduce, that will reduce, production will increase, farmer will get benefit, and also environmental friendly. This is what जेमती भाव 10 kg रो यूरिया सी यूज करथला, because of technology 5 kg यूज करिवो और 6 kg 4 kg बंचिला, that means this 4 kg would have damage to environment, तो आमे ताकू मध्य reduce करि पाले. So precision farming रो जति आमे benefits देखिबा, that will reduce the cost of input cost. Obviously overall the cost of agricultural produce will also reduce, plus that will a human interference कमी जिवो, technology will more interference, technology हमके बहुत interference करिवो, and कोट ना कोट cost of production करके हम effective environmental friendly करबा,
रियल टाइम रे डेटा आम यूज करिपरिबो रियल टाइम डेटा जेते अछि डेटा एंड फैक्ट्स ताकू यूज करिपरिबा ना आसीबा मेटल प्रिसिशन फार्मिंग रे में दीज आर द कंपोनेंट्स को हम देखिबा बट व्हेन इट कम्स टू द हॉर्टिकल्चर जेतरा obviously let's say तमे पढ़ी न क्वेश्चन तो सर आमे तो प्रिसिशन फार्मिंग पढ़िछे but it was not expected that they would have asked or it was not predicted that they will ask the question from the horticulture side भाई एग्रीकल्चर तो पढ़ी तो कौन दरकार that means if you have gone through the agriculture part that means there is no need to at least we can adjust the answer तो हॉर्टिकल्चर भी कौन हबो तो हॉर्टिकल्चर में कौन करबा we can yield हॉर्टिकल्चर खाली साधारणतः में कहबा जेमति कि वेजिटेबल्स हला तो we can improve the yield हॉर्टिकल्चर कौन करबा yield बढ़ाई परिबा कॉस्ट रिड्यूस हेई परिबो आगे नहीं कॉस्ट को रिड्यूस इट वुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली अगेन हम सेम पॉइंट को रिपीट करबा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हेई परिबो राइट सस्टेनेबल हेई परिबो कॉस्ट कही परिबो फार्मर्स मनकर हेल्थ इंप्रूव हेई परिबो द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स विल आल्सो इंप्रूव बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे while spraying the pesticides ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରପ୍ସ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଦରକାର ତାଠୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି there was also news 2-3 years back that some farmers in Maharashtra while spraying the pesticides in cotton or somewhere else I forgot that many of them got blind so this kind of news would not be there so this is all about that right done anyone wants to add something so that means obviously under the amekhiba scheme jodi jota tumku diyachi mission for integrated development of horticulture this one is integrated development of horticulture now ए में देखि देले तो आंसर रे मु तुमको प्रिसिशन फार्मिंग कोन कहि देले टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स कोन होछि ताकू कहि देले एंड बेनिफिट्स आल्सो वी हैव डन इट जेमते एठी तुमको लिखाइ छि देखो फॉर एग्जांपल सॉफ्ट सॉइल हार्ड सॉइल कथा कहि छि हार्ड प्रिसिशन एग्रीकल्चर्स यूजेस ऑल मॉडर्न टेक्निक्स जेमते जीपीएस कथा मु कहली प्रिसिशन फार्मिंग रे कोन कोन न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जोटा मु कहली फर्टिलाइजर कथा जेमते तमे एठी देखि परिबो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज करि परिबो प्रिसिशन रे तो सेमी सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये सब हमें देखिले ये जोटा सॉइल हेल्थ कार्ड भी तुम कहि परिबो क्रॉप यील्ड विल आल्सो इंप्रूव क्रॉप यील्ड विल आल्सो इंप्रूव जस्ट अ मिनट हेलो तो क्रॉप यील्ड भी यदि हमें देखिबा दैट विल आल्सो इंप्रूव सो दिस इज अबाउट मशीन मध्ये तुम कहि परिबो so this is done from the artificial intelligence right soil health ये तो सब soil degradation कमिबो ये सब हबो increase productivity बढ़िबो significance त हमें देखि देले आगे नहीं these are the significance ठीक अछि this would be the digital divide ये हमें जिबा next government initiative जा अछि next question को आसीबा mention the Sir, significance of hello. strait हां go मुकुल सर चैलेंजेस टा आसीबो ना बहुत सारा चैलेंजेस माने कि फार्मर अछंती अनरंती सन टेक्नोलॉजी केते से अडॉप्ट करि परिबेनी से सब मु कहतली challenges part हाँ सेटा तुम कहि परिबो एक तो देखो डिजिटल डिवाइड ऑफ इंडिया कथा नै जो डिजिटल लिटरेसी कथा नै जो जदि तुम challenges part को जिवो what would be the challenges part is the digital divide of India whether that technology has reached or not then that would be also the literacy of the farmer literacy also importance then आम कहले ए जो एटा बहुत important cost of technology कोन लोक माने अडॉप्ट करे पे रेडी अछंती कि नाही तो ये सब फ्रैगमेंटेड है कि रही फ्रैगमेंटेड एग्रीकल्चर हमर जोटा जानछ हमर मैक्सिमम होची मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स ये जोटा कि 80% हम कहबा एमान करो ई जो डेटा अछि कैपेसिटी बिल्डिंग करियो पड़िबो तांको पय तमे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेखो कि वी नीड टू डू द कैपेसिटी बिल्डिंग करी कि हम ताकू आगु को जाई परिबा राइट तो जेमति कि तमरो बट कैपेसिटी बिल्डिंग करी परा किसान ई नाम अछि ए तो ई नाम कमेटी लिंक करिवनी कना एटा केवल तो मार्केटिंग पार्ट को आसी जीवो तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जेमति तमरो लिखाइ छै कि नेशनल ई गवर्नेंस फॉर एग्रीकल्चर अछि मशीन लर्निंग अछि रोबोटिक्स हेकिला ड्रोन्स हेकिला एनालिटिक्स ब्लॉकचेन एग्रीकल्चर ए सब हम डिस्कस कर छै तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ता पय अछि किसान केंद्र मध्ये अछि किसान हेल्पलाइन अछि देन आम कहबा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होछि पीएम किसान त स्कीम तो सिद्ध राशि जीवो
So this will be सर मोर गोटे क्वेश्चन थिला कि माने जो फार्मर मानक किसी सब्सिडीज मिलुची कि माने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिया पे एमआईडीएस तरफ रो सब्सिडीज बिल्कुल अच्छी जमती कि तमे ब्लॉक मानकर कौन ही थाए सबू मशीन जमती ड्रोन हेगला पावर टेलर हेगला ट्रैक्टर हेगला ये ब्लॉक तरफ रू मिले जोड़ा कि सब्सिडाइज प्राइस रे मिली जाए हे जो अबे नेक्स्ट टाइम जुआ देन आसीबो थैंक यू सर सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थामस देखो सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट इस्थामस रे एथिपई न्यूज होइतिला बिकॉज़ चाइना इज बिल्डिंग चाइना चाहूची गोटे केनाल करिया पे गोटे रूट ओपन करिया पे राइट तो सेथिपई से ओपन करिया पे चाहूची जो हमर मालाका स्ट्रेट तुम जानछ समस्त मालाका स्ट्रेट तो बहुत ही मैप देखिदेवा जस्ट हाँ चाइना चाहूची एटा देखो दिस इज योर मालाका स्टेट बट चाइना चाहे एपटे गोटे आउट थर ओपनिंग करिया पे तेणु करी आकु नै कि न्यूज रे अछि तो दिस वन इज व्हाट योर ये रहबो इस्थामस दिस वन इज लाइक ए इस्थामस हम कहि परिबा एंड ये होची तमरो स्टेट तो ये जो अछि ना सेति पे एक क्वेश्चन आसी ताले हम कहबा कि व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ स्टेट एंड इस्थामस देखो इस्थामस जेतरा हम कहूचे समस्त तो इस्थामस रो मीनिंग जानि छ इस्थामस इज व्हाट that is the connecting the two large landmass ଯେମିତି for example South America and North America को connect କରୁଛ so that would be the isthmus right ସେଟା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆମର isthmus ତ ଇଏ ରହିବ isthmus ଯେମିତି ଆମେ isthmus ଯେତେ ଆମେ କହୁଛେ ତ isthmus ର benefits କ'ଣ ଆମେ କହିବା land ରେ ତମର connectivity ବଢଉଛି minerals ହେଇପାରେ connectivity ହେଇପାରେ biodiversity ହେଇପାରେ that would be ଯେମିତି କି Panama isthmus କଥା ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ତା ଦ୍ୱାରା ट्रेड हो पारुची बायोडाइवर्सिटी डेवलप करूची ये सब हमें कहि पारो गोटे इस्थामस रो सेमती आमे जति स्ट्रेट कथा कहबा स्ट्रेट रो कोन ही परिबो फॉर एग्जांपल तमे मालाका स्ट्रेट कथा नहीं जाओ तमे इसमें बाबल मंडप कथा नहीं जाओ हार्मुज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कथा नहीं जाओ देन टेक इट स्ट्रेट ऑफ बेरिंग स्ट्रेट कथा नहीं जाओ जिब्राल्टर स्ट्रेट कथा नहीं जाओ दीज आर द इंपोर्टेंट चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड एमन को कोन कहवा इंपोर्टेंट चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड जेमती इंडियन ओशन रो चोक पॉइंट जदि हम कहबा if I draw the Indian Ocean map here, so ये तुम्हारा Africa coast, this side will be your ignorant. So there will also Africa coast जदि हम देखिबा So now that means I mean India map दे देखो here is choke point, here is choke point. This side Australia तुमको ची Indonesia Java. So here is also choke point, here is also choke point. तो इंडियन ओशन को जदि कहूँ सी वेस्ट को जदि हमें ट्रेड तो ये बाबला मंडप हेगला स्ट्रेट और हार्मुज हेगला मलाका हेगला Sunda Strait also there, Sunda Strait. So these are the important strait. Even Pal Strait also here, Sri Lanka, Nepal Strait. But this one is not important because of economic point of view. ये तो important नहीं. तो स्ट्रेट हो जदि इंपोर्टेंस हम देखा जमती कि फॉर एग्जांपल मालाका स्ट्रेट 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड तो ये कौन करूची मालाका स्ट्रेट हैंडल करूची जमती स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कथा कहली 20% ऑफ द क्रूड ऑयल वर्ल्ड क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है कि आसुची because of the Gulf region rich in terms of oil and natural gas. And geopolitics importance obviously tam jancha chetra war हुए so that times everybody wants to choke that so that military supplies तो बंद ହେଇଥିବ ସେମିତି ବୋସ୍ପରସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି टर्की ब्लैक सी तो ये सब जानଛ ब्लैक सी ର पॉलिटिक्स को से कंट्रोल करଥାଏ टूरिज्म हे परियो फिशिंग हे परियो जियोपॉलिटिक्स कथा लेखि परिबा तो दीज आर द इंपोर्टेंस हम कहबा कोथरे आसी जो दैट वुड बी स्ट्रेट रो then isthmus रे कोन हिजबो connectivity हिजबो that would be connectivity because two continent would be connected जेमति कि मुकतली नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका connected through the that is your Panama isthmus other central america भी तुम कहि इधर कैनाल ही परिबो से रोड ही परिबो रेल ही परिबो so this will be there next question Wayanad landslide ऊपर question तमरा सी because it was also in news Wayanad known for his hill that is it's what hilly terrain has witnessed several landslides in the recent year. Analyze the cause behind this landslide in the region. So, what was the main reason? See, Wayanad जदि हमें देखिबा ए what तो Wayanad देखिबा हमें कोन इट्स ए बॉडी पार्ट ऑफ समस्या आंसर तो जतरो ए भले आंसर लिखुछ ना बिकॉज ये एक्चुअली कौन कहले टेस्ट होची लॉन्ग डिस्कशन सेति मु चाहू छी शॉर्ट डिस्कशन करा पे ओनली ओवरव्यू देवा पई मु जदि वेनर टॉपिक पढिबा खाली आमे
स्टेट कथा पड़े ताले सेटा इट विल टेक टाइम बट ऑब्वियसली टाइम दे पर मतलब ସେତିକି ଟାଇମ୍ ତମକୁ ଦଉନି ଏଥିରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କିପ୍ ଇଟ୍ ସର୍ଟ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ତ ଓଭିୟସଲି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆଉ କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ତ ୱେନାର୍ଡ କେସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଦେଉଛି ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର obviously 16 points answer ready principle also as available in ways of youtube telegram channel sorry youtube channel so there you can also watch ki how to write तो केरला सपोज तुम वायनाड लिखुच कि रिसेंटली जमती केरला गवर्नमेंट कही फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द वायनाड विक्टिम्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वायनाड एवरी रिसेंटली कही एंड दैट विल कॉस्ट thousands of crores जोटा कि देइथिले some money was disbursed किछि दिन तळे जस्ट एबे देइथिले तो क्वेश्चन रो डिमांड कोन क्वेश्चन डिमांड कहूची सेवरल लैंडस्लाइड हिची तार कॉजेस को तो दैट मींस हमको खाली टिके लिखितो कि वायनाड रिसेंटली इट वाज स्ट्रक्ड with one of the like post disaster ever India has experienced or whole আমি যদি দেখিবা and has caused perished hundreds of lives को perished করিছি সে তার एग्जांपल রে তুমি সেটা হি লিখিবো so that would be your example then comes to the body part রে তুমি causes को देखियो from different angle causes from meteorological side causes from I would say from the anthropogenic side natural and human made both को तुम्हें डिवाइड करिवो कॉजेस को इन नेचुरल कॉजेस हम कहिबा फॉर एग्जांपल इज बट हेवी रेनफॉल ऑफ द क्लाउड बर्स्ट इट वाज क्लाउड बर्स्ट तमे एठी लिखला बेले कोन लिखिबो इट वाज क्लाउड बर्स्ट दैट कॉज हेवी रेनफॉल so because what 800 some millimeter rainfall हितला न केते टिके देखि देबो 800 तो नो एते हबनी at least 10 centimeters rainfall to 13 centimeters of rainfall गोटे दी दिन रहिची जोटा कि गोटे कॉज ऑफ कंसर्न हे गेला ठीक है देखि दो बिकॉज़ न्यूमेरिक तो मन रुहेनी तो एक्सट्रीम दैट मींस रेनफॉल हितला दैट वाज ट्रिगर्ड द लैंडस्लाइड को आ जाए देखो इट वाज वन ऑफ द कॉज हेवी रेनफॉल देन हम कहबा बट जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी अर्थात इट्स अ फ्राजाइल जोन बिकॉज ऑफ द हिली टेरेन ये गोटे फ्राजाइल जोन सेटा को तुम लिख पारे देन फ्लड एंड इरोजन तो आपको देखि पारे अच्छा एथरा आउ कोन लिखि पारथांते तो ये गोटे होची फ्राजाइल जोन हेवी रेनफॉल प्लस आम कहबा एठी जो माने जो लैंड रो जो आम कहबा कि स्ट्रेंथ जहाँ को आम कहू कोन ताकू मु कोन कहे कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम तो लैंड रो कैरिंग कैपेसिटी जदि आम देखिबा इट वाज आल्सो लेस कैरिंग कैपेसिटी दुई रे जति रॉक रो स्ट्रेंथ देखिबा ना स्ट्रेंथ भी कम थिला रॉक रो स्ट्रेंथ कम थिला कैरिंग कैपेसिटी कम थिला फ्रेजाइल थिला तापर जति रेनफॉल हे गेला तो से आउ कैरी करि पाला नाही तो दैट वाज द कहबा कि जियोग्राफिकल रीजन आउ कोन ही पर जियोग्राफिकल रीजन जो शियर स्ट्रेंथ थिला ना रॉक रो द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक इट वाज आल्सो द शियर स्ट्रेंथ भी कोठी ना कोठी कमी की थिला तण करी कि ये ट्रिगर हैला anthropogenic factors कोन बिकॉज़ ऑफ तमे देखिबो कि डिफॉरेस्टेशन करी कि टी गार्डन करतबा रिसोर्ट करतबा बिल्डिंग्स करतबा दिस वाज दैट देन कंस्ट्रक्शन ए सब करेगला सिल्टेशन ऑफ डैम्स दैट इज व्हाट पंसुरा सागर डैम्स जोटा कहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मु कहली कि गछ को काटकी कले देन जो हमर गडगिल कमिटी थिला गडगिल कमिटी कथा सुना गला नाही तो ये सब कथा तमे मध्ये लिखि परिबो गडगिल कमिटी जेतलो कहितले कि वेस्टर्न घाट को डिक्लेयर करो है ना अनडिस्टर्ब कर दियो ताकू किंतु डिस्टर्ब करो नाही तो ये माने कहले प्लस हम एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी कथा मु तुमको बहुत टाइम क्लास में डिस्कस करछि यू कैन आल्सो मेंशन दैट वर्ड इन आंसर राइट देन तमे आईएमडी सी टाइम रे देखिबा ये तो अलर्ट देथि हेवी रेनफॉल थिला एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द लैंड प्रोन एरिया तो ये देखि दो तुमरो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कंक्लूजन रे कोन लिखिबो ये देखो हमें नेचुरल डिजास्टर को रोकी परिबन बस मिनिमाइज करि परिबो केमिति थ्रू द वेल प्रेडिक्शन आईएमडी मध्ये ठीक ठाक प्रेडिक्ट करथिले ये रेनफॉल ठीक ठाक होबो बोली तो ये सब हमें प्रेडिक्शन जो थिला एंड ता व्यतीत जो नुआ टेक्नोलॉजी आसी जोटा काली मध्ये डिस्कस करथि सॉइल नेलिंग कथा नै जो रॉक बोल टेक्नोलॉजी कथा नै जो afforestation reforestation and we have to also enforce the rules and laws जेते अछि कोठी कोठी जो गडगिल कमिटी हितला ताकू कोठी कोठी रेस्पेक्ट दवार थिला तो ये हमको हमें कहि परिबा कि दिस इज हाउ यू कैन कंजर्व एंड
सबले मन रखियो जेतले तुम ए भले आंसर को कंक्लूड करछ राइट और एंड योर आंसर लाइक we need eco-centric and sustainable development. We need eco-centric and sustainable development करके conclude करि परिबो. Then comes to twister कौन. Then fourth number question twister. देखो twister is nothing, it's a tornado. It's a what? Tornado. Tornado. आगु कौन कहा जाए tornado और किसी नहीं. Tornado को कहा जाए twister. UPSC पचार मध्य. ट्विस्टर से कही कहीं मेक्सिको रे अधिक देखा प्रथम कथा देख यार शेप जो होता है ना फनल शेप रही है दैट कुड बी लाइक दिस इट कुड बी फनल शेप एमती फनल शेप रही है राइट तो बेस टा नैरो हम टॉप विल बी वाइड तो फनल शेप होता है विंड स्पीड कुड बी वायलेंट विंड स्पीड बहुत अधिक रहिबो पाथ रहिबो रोटेशन रहिबो ये सब हमें देखिदेबा बाय चांस शेप केमती रहबो इट कुड बी फनल शेप जोटा मु कहूची शेप विल बी लाइक दिस इट कुड बी फनल शेप राइट violent air it will तो ये characteristics तारा दिया है formation के तरह भी summer है कहीं क्या है because these are the intense low pressure these are intense low pressure and because of the Coriolis force जो को ये rotate करिवा start करे आप एक गोटे thrust दरकार कौन दरकार that means low pressure ये formation पे कौन दरकार low pressure जहाँ को हमें कहा गोटे thrust without thrust ये formation ही परिव नहीं then wind speed would be pretty fast बहुत अधिक रहबो damage बहुत करी थाए प्रत्येक वर्ष uprooting the tree damaging the houses this year one of the worst tornado affected Florida यदि तमे एई वर्ष देखिबो बहुत ही फ्लोरिडा एंड खास करी हम आपको कहबा अपने टेक्सास को म्यूट करके रखो फ्लोरिडा एंड टेक्सास दैट हम कहबा ये कोन हितला एक्सपीरियंस करला वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट राइट तो ये आम देखा गल्फ ऑफ मैक्सिको केस रे आम देखी दैट मीन्स टेक्सास एंड फ्लोरिडा रे बहुत देखा जाए कारण एथिपे ही थाए दिस रीजन इज हैविंग द मॉइस्ट एयर वार्म एयर एंड द लैंड एंड वाटर मीटिंग पॉइंट जो फ्लोरिडा रे एथिपे हुए बिकॉज ऑफ मॉइस्ट एयर वार्म म्यूट करके रख बारंबार कुछ दिस म्यूट करके रख right so there would be warm air mass so what happens warm air mass जेमती तुम देखि परिबो this is the what hot spot of tornadoes एटी कहीं देखा जाए ना see there is a like front like situation forms गोटे front like situation formation ही था where the warm आम कहबा खास करी कोन हिता के टू एयर मास warm and moist air mass which जदि हम कहबा टोर्नाडो फॉर्मेशन रे हेल्प करथाय है ना तो मीट द कूलर ड्राई एयर जितरा में कहबा जो गल्फ मीट्स इथरा मीट करूची कूल ड्राई एयर एपटे मॉइस्ट एयर आसीबो एपटे कूल्स एंड ड्राई एयर रहबो तो दीट जितरा मीट करूची ना दैट इज व्हाई दिस फॉर्म तो बेसिकली हम कहबा मीटिंग ऑफ टू एयर मासेस रो जो मीटिंग रहउची सेति पे कोन होउची एंती देखा जिवो so this reason kahi formation hochi because the cool dry air mass comes from the land and from here the moist air jibo ta dhara kon heje gote front formation kariki extreme heat condition re emti formation hei thai तो राइट तो ये टर्नाडो हमके देखि पर थंडरस्टॉर्म्स वगैरह थाई से थरे गस्टी विंड्स रहबो थंडरस्टॉर्म रहबो लाइटनिंग रहबो क्लाउड मध्ये फॉर्मेशन ही थाए तो ये हमें ताको कहि परिबा पूरा जो हमर प्लेन को सेंटर करि थाए देन नेक्स्ट analyze the government analyze the but government's approach towards the conservation coral conservation by कौन देखो obviously corals को कहा जाए the metropolis of the ocean बोली ताको कहा जाए rain forest बोली कहा जाए तो एटा ये क्वेश्चन एथि भी पचरा जाय because of the one nation one island ताले one nation one island and one island one resort कोन one island one resort जो वन आइलैंड वन रिजॉर्ट करके हमें रखीचे तो जेतले रिजॉर्ट रो डेवलपमेंट ए ही जाउची ता दर कौन होचे कि रिजॉर्ट रो राइट सो रिजॉर्ट रो जो देखुचे कि जेते रिजॉर्ट तुमे आइलैंड डेवलपमेंट पई करूचो ता दर कौन होची दैट विल आल्सो हार्म्स द बायोडाइवर्सिटी को से हार्म करिवो राइट
तो कंजर्वेशन एफर्ट जदि आम देखा देख कंजर्वेशन केमती होता है कारण आम इंडियन ओशन रे जिते कोरल्स अच्छी दे आर ऑल्सो susceptible for the environmental pollution and the global sea level change and temperature as well. तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ कोलाबोरेशन ऑफ द मालदीव्स एंड श्रीलंका मिसेकी आर्टिफिशियल कोरल्स करूछंती कोरल ट्रांसप्लांटेशन करा होची फॉर एग्जांपल सपोज मते अंडमान निकोबार बा एठी किछि गोटे प्रोजेक्ट करिवार अछि देन सडनली आई फाउंड दैट हम कहबा के जो कोरल्स अछि एठी कोरल्स डैमेज हो तेणु करी एठी कोरल्स को नेकी हम कोन करो एठी ट्रांसप्लांटेशन कर दबा राइट तो सपोज अंडमान निकोबार कौन गोटे तुम प्रोजेक्ट करोचे कोरल्स डैमेज हो एरिया जिते कोरल्स अच्छी ताकू नहीं एठी ट्रांसप्लांट कर दबा so that means you can also do transplantation of the corals you can do what from artificial corals kari pariba then we are also having coral conservation plans achi marine protected area achi environmental protection act achi 1986 ke basla 1986 environmental protection act achi then sustainable development goal अछि below the life below water कथा भी नहीं परिबो तमे SDG goal को भी ऐड करि परिबो life below water so these are the government scheme हमें कहि पर apart from that हमें कोन कहिबा जोटा मु तुम कहली कि national marine turtle action plan then coral reef conservation project लागसे अंडमान निकोबार जोटा मु तुम कहली artificial coral कथा लिखिबो है ना challenges दिया हिची तो सेटा टिके challenges एया कि एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन होची ओशन टेम्परेचर बढ़ुची आमे डेवलपमेंट को प्रमोट करे को पडुची देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्विंग होची एंड ग्लोबल सी लेवल सी एसएसटी आमे कहबा जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जाउची दीज आर द चैलेंजेस हमको देखिया को मिलुची देन सी फ्लोर तुम जान टूरिज्म प्रेशर बढ़ी बढ़ी जाउची पुनी आमे कुछ डीप ओशन मिशन अछि माइनिंग ऑफ मिनरल्स अछि ये सब चैलेंजेस मध्ये हमको देखा पड़ियो आर्टिफिशियल कोरल्स कथा टिके समस्त लिखिबो एंड प्लांटेशन ऑफ कोरल्स कथा मध्ये जिगर करियो टिके सेति केले आंसर हे जो प्लस मैप गोटे देखै देबो रिसेंट केस स्टडीज दबो जेंति गालाथिया बे रे होची तमर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट होची सेथरे जो कोरल्स डैमेज हो ताकू इधर हमें आर्टिफिशियल आ गोटे जगह नेकी ट्रांसप्लांट करिबा नल दार कंजर्वेशन पे किछि गोटे करे को पडिबो व्हाट फैक्टर लेड टू द ग्लोबल led to the current global crisis in the availability and accessibility of the fresh water. So data says what SDG जदि हम कहबा that is होछि के 2 billion peoples worldwide does not access to safe. That means simple मु कहबी 50% of the world population is living in water stress region. 50% of world population is living in water stress region. Water stress region रे रहउछंती. Right. तो सेठी हमको देखा जीवो देन आमे देखिबा कोन क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली अच्छा ये क्वेश्चन रो डिमांड टिके देखि देबा डिमांड कोची करंट ग्लोबल क्राइसिस ताले करंट ग्लोबल क्राइसिस हैला बोली तमे जानि छ केमती फॉर एग्जांपल वाटर मिली नथला बेंगलोर रे बेंगलुरु वाटर क्राइसिस फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका रे डरबान कथा नै छ डरबान रे मते हेतिला ना एवरीवन डरबान एंड डरबान रे हेतिला ना साउथ अफ्रीका रो फास्ट फास्ट वाटरलेस सिटी की डरबान सेकंड होची बेंगलोर इवन वाटर क्राइसिस इन शिमला मनाली ए जगह रे भी देखा जे समर रे राइट वाटर क्राइसिस हम कहबा वाटर क्राइसिस कथा तमे सेमती एग्जांपल दे परिबो सहारा रीजन कथा नै जाओ आरब रीजन कथा नै जाओ जो रीजन रे कारण एटा वर्ल्ड कथा कहिछि ना तेणु को वर्ल्ड एग्जांपल किछि दवा पड़िबो जेमते मु बेंगलुरु कथा कहली फ्रॉम इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका में देखले फ्रॉम द सहारा रीजन कथा देखले इवन रियो डियो जेनेरियो रे मध्ये वाटर स्कार्सिटी आसीतले न्यूज रे देखाइतले सेठी मध्ये देन द सहारा रीजन रे मध्ये देखाइतला so these are the some examples you have to add apart from as I mentioned 50% of the world population is residing in water stress region of the world ठीक अछि तनु करी हम देखिबा कारण जेहेतु क्वेश्चन कहछि ना करंट तनु को किछि करंट रो एग्जांपल न देले हबो नाही देन अवेलेबिलिटी फ्रेश वाटर ताले व्हाट फैक्टर को फैक्टर्स हैज लेड
factor has led to the climate change. When you are saying climate change, that means the rainfall pattern. That means, for example, El Nino. ଏବେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ why Bangalore experienced drought in the last year, this year in 2024. Why Bangalore? Because 2023 and 2024 both the years were El Nino years. যেহেতু এই 2 ବର୍ଷ El Nino ଥିଲା, that is why there was extreme heat waves in India. That is why the water scarcity was very frequent because of the El Nino. So here you can also write El Nino is a factor. Another factor is that, like India কথা মুখ, half of the world groundwater is being drawn for the agriculture. India is drawing 50% of the groundwater for the agriculture alone. Population growth, agriculture, overexploitation of the groundwater for agriculture, deforestation, melting ice. ଯେମିତି let's say hilly region ରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି because of melting of what glacier ଆମେ କହିପାରିବା, changing rainfall pattern and extreme heat କଥା ଲେଖିବ because of extreme heat ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହଉନି, ଯୋଉଠି ହବା କଥା ହଉନି, ଯୋଉଠି ହଉଛି. So these are the certain areas ଆମେ କହିପାରିବା because how the water is the value addition part ହେଇଯିବ ତମର. Move on. Seismic shadow zone କେମିତି କୁହେ କି earth core କଣ? Now how do seismic shadow zone demonstrate the presence of earth core? अर्थात presence of earth core नुह, the state of earth, the state, whether it's a solid, it would be like semi liquid, solid, କିଛି କୋଉ state ର ଅଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା. obviously p waves, s waves କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍. this is fine to all. this one 105, this would be 105 to 150, ଏଟା କ'ଣ ଅଛି 103 to 60, ଠିକ ଅଛି. ऐसा 120 ହେବ ନା, 150 ତ ନୁହଁ, ऐसा 120, 145 ଦେଇଛି. Okay, done. 5 to 45, right? NCERT ଟିକେ ଦେଖିଥିବ, it's 105 to 145. So this much, right? NCERT ଦେଖିଥିବ. ତାହେଲେ shadow zone, everybody is aware of the shadow zone because of the, there would be କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, because of କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ rare to denser medium କୁ ଯିବ କ'ଣ, it would be normal ରହିବ. But the denser to rare it would be away from, because of the what, that refraction will be there. The refraction ଦେଖାଯିବ. So due to that, this shape is what, due to the refraction. ये କ'ଣ ଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି shadow zone କେମିତି analysis କରୁଛି. ଦେଖ shadow zone ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ, p ର କାହିଁକି, କାରଣ s ଆମେ ଜାଣିଛେ liquidରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ large shadow zone, but p ପାଇଁ କମ small shadow zone, because ସେ solidରେ ବି ଯାଇପାରିବ, liquidରେ ବି ଯାଇପାରିବ. Observing ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, but କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି s waves ଯାଇପାରୁଛି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡକୁ, ସେ ଯାଇପାରୁନି. ନାଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତମକୁ, ଫିଗରକୁ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବିନି, ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ବେଟର ଟୁ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ. ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖ କି what is happening here. if ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି s waves is not able to reach this region ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, and p is not able to reach this much, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି s ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଯୋଉଠି s କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ. ସେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତମେ କହ ସାର୍ ସେଟା ସଲିଡ୍ ହେଇପାରେ, ନା ମୁଁ କହିବି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେବ. ତମେ କହ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କହିଲେ, ଏଇଟା ସଲିଡ୍ ବି ତ ହେଇପାରେ ନା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଲେଖିଛି, କାରଣ ସର୍ଫେସଟା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଲିଡ୍ର ଅଛି. ଆଉ ଯଦି ସଲିଡ୍ରେ ଏସ୍ ଯାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହିଁ ହେବ. ତମେ କହିବ ସାର୍ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ବି ହେଇପାରେ. ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ହେଲେ ଉପରେ ଏତେ ହେଭି ଜିନିଷ କେମିତି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଛି, ଏତେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରେ, କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା. ତେଣୁ କରିକି ଆଉ ନ କରି ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ. ଦେୟାର would be no other chance, only liquid layer below the surface, because surface ରେ ଆମେ ବା ରହୁଛେ ଦେଖୁଛେ solid. if s can move through the solid, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଲା ସେ ହେଲା liquid, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ. that is the end. ନା ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ଏବେ. ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ somewhere there is a liquid zone. କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, but somewhere there is a liquid zone. s proves କର. come to the p. p କ'ଣ proof କରୁଛି ନା, if p can pass through the all the layer and move to opposite side of the earth ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଲେୟାର ଦେଇ ଯାଇପାରୁଛି. but ये कन्फर्म करूची कि एस लिक्विड लेयर अच्छी केमिति, प्लस कोर को मध्य से कहबो. भाबो एठु मु छाडिली गोटे वेव्स को एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर.
ହେଲା ଭାବ ଏ ଟୋଟାଲ डिस्टेंस होची लेट्स से मु कहबी फॉर एग्जांपल 10 फॉर एग्जांपल मु 10 ताले से केते मिनिट रे पहुंची भाब लेट्स से 12,000 किलोमीटर ताले मु अर्थ कहबी गोटे पोल रो गोटे पोल को 12,000 हो 10,000 समथिंग हो देख तो न्यूमरिक जा भी हो 10,000 ताले जदी गोटे 100 स्पीड रे जोजी बा 1000 स्पीड रे गली ताको 10 आवर्स लागी लेट्स से 1000 स्पीड रे जोजी पर किलोमीटर 1000 स्पीड रे गोटे वेव्स जाउची ताको 10 आवर्स लागिबो गोटे पोल रो गोटे पोल कर पहुंचिया पे किंतु से 9 आवर रे पहुंची तबे देखला को 9 आवर रे पहुंची ताले कोठी ना कोठी अर्थ रो गोटे एमते लेयर थो जोठी डेंसिटी अधिक अछि बोली स्पीड बढ़िला डेंसिटी आ जदी गैस रहबो तो स्पीड बढ़िबोनी ताले डेंसिटी अधिक ताले से डेंसिटी जोनटा कोठी ही पारे दैट कुड बी कोर सेति हमें कोर को कहूचे डेंसिएस्ट जोन बोली कहला गेला राइट एवरीवन तेथरा मुझे ताले तुमको सर ए जो जोन सैडो जोनटा एटा कोन करा गेला ताले हम जानिले कि कोर कोठी ना कोठी सॉलिड तो सॉलिड ही सबठु डेंसर ही परिबो सेटा हमें कहि देले एंड लिक्विड है ये तुम आउटरटा है लिक्विड तो दिस इज हाउ सैडो जोन्स हमको जनइबो कि वेदर द अर्थ कोर इज इन व्हिच स्टेज ए जो एबे समझते करेक्ट नेक्स्ट अब जो 8 नंबर क्वेश्चन concept of marine cloud breaching and evaluate the advantages and disadvantages देखो ये होची गोटे जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज राइट proposed by whom John Latham 1990s रे जहाँकि हमें रिफ्लेक्टिंग द क्लाउड्स ओवर द ओशन बाय कौन करबा में मिटिगेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देखो हमें कौन कौन चित्र में को क्लाउड इंजीनियरिंग ब्राइटनिंग कर दबा में सपोज भाबो क्लाउड को हमें क्लाउड रो ब्राइटनिंग बढ़ी दबा कलर बढ़ी दबा ताले अधिक आल्बेटो हबो ताले कूलिंग हबो तानु ता आधार कोन हबो माराइन कूलिंग हबो सेम जहाँ को हमें को जियो इंजीनियरिंग जेमति फॉर एग्जांपल क्लाउड सीडिंग एंड क्लाउड ब्राइटनिंग सेमति दैट कुड बी मिरर हे परे मिरर प्लेसिंग ऑफ मिरर जेमति नै जबो स्काई रे जदी प्लेसिंग ऑफ मिरर कर दबो सोलार कर दो ता आधार मध्ये आल्बेटो हे परे राइट तो क्लाउड ब्राइटनिंग द्वारा कौन हम देयर वुड बी मोर एल्बेडो एल्बेडो बढ़ी बढ़ी जीवो सी द एटमॉस्फेयर दैट मींस ता द्वारा जदी एल्बेडो बढ़ी बढ़ी जीवो सॉल्ट विल ड्रॉप एटमॉस्फेयर रे सॉल्ट ड्रॉप कर जीवो हम कहबा कि टेंपरेचर मध्ये कमी जीवो क्लाउड ब्राइटनिंग हे जीवो इंक्रीज जोटा कि मुकले एल्बेडो हबो हेल्प कूल अर्थ सरफेस हे जो ओशन कूल हे जीवो तो बेसिकली ये सब हमको क्लाइमेट रेगुलेशन रे किंतु सेटा लॉन्ग टर्म रे ठीक नो लॉन्ग टर्म रे सेटा ठीक नो राइट ओरल प्रोटेक्शन नहीं परिबो एटा कॉस्ट भी अधिक जनरेट करिवो ना एंड नेचुरली दैट इज आल्सो इथिक्स अगेंस्ट द वर्ड क्लाइमेट इथिक्स हम कहि परिबा रिस्क रही परिबो जेमति कि अनसर्टेन आउटकम्स सब कोन जणा नै इकोसिस्टम ऊपर इंपैक्ट पड़िबो जो मन की इंसुलेशन दरकार जो इकोसिस्टम को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हबो गवर्नेंस एंड रेगुलेशन दिस आर द आल्सो चैलेंजेस तो क्लाउड ब्राइटनिंग तो सिंपल हमें बुझी जवा कि कौन सी गोटे तुम इंजीनियरिंग करके क्लाउड को जदी ब्राइट करूचो तादर आल्बेटो बढ़िबो कूलिंगनेस हबो से रीजन रे देखो नंबर ऑफ रेपरकशन मे बी देयर and unless and until you have not applied the things outcome गोटे हमें कहबा कि कौन हबो हमको जाना नहीं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा व्हाट आर द फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी रॉक देखो प्राइमरी व्हाट आर द फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी रॉक रो फीचर कौन इते समस्त तुम जानछो और कैरेक्टरिस्टिक्स देखो प्राइमरी रॉक जेमति तमरा ग्रेनाइट हे गला एकला इंट्रूसिव हे गला एक्सट्रूसिव हे गला दिस आर द प्राइमरी रॉक तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हे परे कैरेक्टरिस्टिक्स कब जेमति कि लेट्स से ग्रेनाइट कथा नै जबी वो जदी कहबी ग्रेनाइट कथा नै जबी दैट वुड बी हार्ड इट वुड बी टेंसाइल फोर्स बहुत कम अछि आ ये देखा जीवो तो सेमति डिफरेंट रॉक विल हैव प्राइमरी रॉक पर डिफरेंट आसीबो ना ये हम कहबा लेट्स से रिसेंट प्राइमरी गोटे हे परे ओल्ड प्राइमरी हे परे रिसेंट जदी हो सॉफ्ट हो ओल्ड जदी हो हार्ड हो जेमति कि ग्रेनाइट कथा हम कहली और रिसेंट कोन से गोटे माग्मा फॉर्मेशन तो हमें बाथुलित कथा नै जाओ लाकुलित कथा नै जाओ फैकोलित कथा नै जाओ ये जेते अछि तमरो दीज आर व्हाट दे आर प्लूटोनिक इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव हे परे जेमति हम कहबा लावा प्लेटू हे परे ये भी देखा जाई परे प्राइमरी रॉक लावा प्लेटू आल्सो बट दैट वुड बी सॉफ्ट बसाल्ट हे परे जेमति कि लावा प्लेन हे परे प्लेटू हे परे इस वो को देखा जाई परे तो दिस वुड बी द टाइप्स हमें कहबा नाउ व्हेन इट कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स
characteristics जदि हम कहबा फॉर एग्जांपल प्राइमरी रॉक फॉर्मेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मार्क बाबा लाभा तारा हबो बाकी तमे देखो एथरे लिखा अछि मिनरल्स रहइबो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स रे मिनरल्स वगैरह तुम न लिखी बेटर टेक्सचर कथा लिखो व्हाट जॉइंट कथा लिखो इंटरलॉकिंग कथा लिखो दे आर हार्ड कथा लिखिबो समटाइम्स देयर वुड बी सॉफ्ट आल्सो ए लेयर हेइथाय मध्य डिफरेंट डिफरेंट लेयर भी हेइथाय जेमति कि मु कहली कि वोल्कन लाभा प्लेटू तो obviously that will develop the layer for example ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଡେକାନ ପ୍ଲେଟୁ ସରି ଇଣ୍ଡିଆର ଡେକାନ ପ୍ଲେଟୁ ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଲାଭା ପ୍ଲେଟୁ ଇଏ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ ଏକ୍ସଟ୍ରୁସିଭ ଇଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୁସିଭ ନୁହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରୁସିଭ ତ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ହାର୍ଡ ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କଥା କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ would be hard तो characteristics ରେ ଯିବ ଯେମିତି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ permeable permeability ବହୁତ କମ ରହିବ population of water ହେଇପାରିବ ନାହିଁ tensile force ବହୁତ କମ ଅଛି ये बहुत ही फाइनर ଆମେ କହିବା minerals ରେ ହେଇଥାଏ बॉन्डिंग बहुत भलो थाए लेयर थाए बट जॉइंट्स नो थाए दिस वुड बी लेयर्स जॉइंट्स थाए जॉइंट एंड लेयर्स बहुत देखा जाए बट लेयर्स बहुत कम थाए जॉइंट वुड बी then plates discuss why plates are commonly referred to as the repository of minerals plateaus sorry plateaus को कहीं आ जाए देखिए एक क्वेश्चन भी यूपीएससी क्वेश्चन सिंपल हम कहवा जेमति कि मु कहूची कि लेट्स से छोटनागपुर प्लेटू फॉर एग्जांपल मु कहबी छोटनागपुर प्लेटू फॉर एग्जांपल आई वुड से कर्नाटक प्लेटू फॉर एग्जांपल मु कहबी हमर केउझर प्लेटू ऑफ केउझर मयूरभंज ये सब कोन दे वुड बी रिपोजिटरी ऑफ मिनरल्स किंबा तेलंगाना प्लेटू कज ए माने कोन मिनरल्स रो गंताघर जेमति तमे ऑस्ट्रेलिया रे कथा नै जो दिस वुड बी हियर दिस वुड बी हियर सेमती ब्राजिल कथा नहीं ब्राजिलियन प्लेटू कथा नहीं दैट इज आल्सो मिनरल रॉक कि दैट मींस द पॉइंट इज दैट व्हाई प्लेटू बिकॉज़ प्लेटू हैज अ ओल्ड लैंडफॉर्म जेतले मिनरल फॉर्मेशन हेते ना मिनरल को मिलियंस ऑफ टाइम्स दरकार फॉर्मेशन पर बॉन्डिंग कोन मिनरल्स ऑफ बॉन्डिंग जाको हम कहसे माने कोन बॉन्डिंग है कि जो मिनरल्स फॉर्मेशन में टाइम लगी था so that is why the plateaus are the mineral रिपोजिटरी आम कहीपर अद ताकू तुम कह जमी छोटनागपुर प्लेटू को कहुए द मिनरल्स कैपिटल ऑफ इंडिया डेकान प्लेटू आम कह अच्छा तो छोटनागपुर प्लेटू रे मु कहली खास करके छोटनागपुर प्लेटू कथा तुम लिख तो से कौ देखा जाए डेकान प्लेटू रे कौन देखा जाए कर्नाटक रे कौन देखा जमी छोटनागपुर प्लेटू यूरानियम बक्साइड कोल आयरन मैंगनीज ये सब देखा जाए राइट किंतु ओडिशा रे तुम कह आयरन ओर मैंगनीज क्रोमाइट ये सब देखा जाउची मुझे ब्राजिलियन कथा कहली जो ब्राजिल कथा कहते सेठी बोधे तुमको आयरन बहुत देखा जाए ऑस्ट्रेलिया डेकन प्लेटू तो हमें ऑलरेडी पढ़ीचे राइट सो दीज आर द प्लेट्यूज हम कहवा कि जो प्लेट्यूज मिनरल्स बहुत है जमती मु ऑस्ट्रेलिया कथा मध्य कहिछि राइट तो ये सब गोल्ड साउथ अफ्रीका रे देखा जाए अफ्रीकन प्लेटू रे तो डिफरेंट प्लेटू आगे तुम बेसी वर्ल्ड इंडिया को मध्य किछि लिखिबो तादर हिज आंसर ना इथरे किछि डाउट अछि आ को हेजबो बट मैप ड्रॉ करिवो देन आसवा प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुला देखो से कहछि पेनिनसुला रो जियोलॉजिकल हिस्ट्री लिखो अर्थात पेनिनसुला जेमति हमें पेनिनसुला रो जियोलॉजिकल हिस्ट्री कोठी टर्शियरी रॉक होची कोठी मेटामॉर्फाइज्ड रॉक होची कोठी आर्कियन रॉक होची कोठी ओडोबियन होची कोठी हमें कहबा कुडापा रॉक सिस्टम होची कोठी बिंध्यन रॉक सिस्टम होची तो ये जो डिफरेंट रॉक सिस्टम ना ताकू लिखा होची the major geographical division होची कोन हमें कहबा प्रीकैम्ब्रियन गोंडवाना डेकान टर्शियरी रिसेंट ये तेणु डेकान प्लेटू रे हमें जदी बेसिकली देखिबा जेमति कि आर्कियन सिस्टम जो मन कि मतलब बिलियंस ईयर एज ओल्डेस्ट रॉक बोली आर्कियन ग्रेनाइट हे परे सिस्ट हे परे गेनिस ग्रेनाइट तो हबन गेनिस अब सिस्ट अब सेल्ट सिस्ट हे जिवो हार्वार सिस्टम कथा नै जो डापा सिस्टम कथा नै जो देन तमे राइट दीज आर द रॉक सिस्टम हमें कहबा सेमति पुरानी ग्रुप रे जदी हम देखिबा कुडापा सिस्टम आंध्र प्रदेश कथा विंध्यान सिस्टम कथा कहिछि राइट तो ये सब तमरा आसी जिवो दिस वुड बी द रॉक को लेखियार अछि तम बेसिकली यू हैव टू डिस्कस द रॉक सिस्टम कथा को कहर अछि यदि तमे चाहबो से कंक्लूजन करे बिकॉज़ ऑफ दिस ये जो रॉक सिस्टम जो को हमको मिनरल्स मिलुछि बिकॉज़ ऑफ दिस रॉक सिस्टम ए रॉक सिस्टम जो को ही हमको मिनरल्स मिलुछि ट्रायंगल शेप रो पूरा रहिछि देखो this is kind of 8 was a peninsula your peninsula is from here right तो ये पूरा टाको हमें नहीं जवा देन क्लाइमेट को आसी जीवो अच्छा एथरे रॉक सिस्टम कोन को लिखबो एथरे सेडिमेंट जदी तुम लिखबो
हाँ एथिरे आउ गोटे लिखि परिबो कोन गोंडवाना भी लिखिबो तो गोंडवाना सिस्टम भी लिखिबो गोंडवाना कथा लिखिबो टर्शियरी कथा लिखिबो टर्शियरी रॉक सिस्टम और कोन कोस्टल रीजन रे देखा जिवो गोंडवाना जते रिवर वैली रे देखा जो गोंडवाना रॉक सिस्टम देन से कहूँ कि बे ऑफ बेंगल रे कहीं अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं व्हाई बे ऑफ बेंगल्स मोर प्रोन टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन कंपेयर टू अरेबियन सी दिस क्वेश्चंस बहुत टाइम हमें मध्य क्लास रे डिस्कस करिছে रीजन बीइंग कि जदि हम कह बे ऑफ बेंगल पर सी सरफेस टेम्परेचर टिके अधिक थाए प्लस अरेबियन सी रे टिके कूलर थाए प्लस एटी फ्रेश थाए वाटर रो फ्रेशनेस अधिक थाए आज कंपेयर टू अरेबियन सी देन geographical and atmospheric condition बे ऑफ बेंगल डिफरेंट केमती हम कहबा साधारणतः अरेबियन सी होची गोटे जेमती हम कहबा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया आडको आसुची बेसी as this is close to the what Arabian Peninsula जदि हम कहबा जोटे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आसे प्लस बे ऑफ बेंगल कहते हैं एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर अधिक था आज कंपेयर टू अरेबियन सी बिकॉज ऑफ मालाका स्ट्रेट बिकॉज ऑफ लालिना कंडीशन कारण मालाका स्ट्रेट दे जो हमर अछि रेमनेंट्स ऑफ टाइफून्स आल्सो मूव्स टू द बे ऑफ बेंगल को आसला पर से माने पुनी गोटे गोटे साइक्लोन रे कन्वर्ट हो जाती प्लस जेतरो तमरो लालिना ईयर चली छी दिस रीजन विल हैव लो प्रेशर द वार्म वाटर आल्सो पास टू दिस पार्ट तादर मध्य हेइ थाए सी सरफेस टेम्परेचर जहाँ मैं एसएसटी कहूँ सेटा मध्य बे ऑफ बेंगल टिके अधिक थाए तो प्लस ईस्टर्ली रे इन्फ्लुएंस बे ऑफ बेंगल ऊपर अधिक पड़ी थाए so that is why Bay of Bengal will have what more tropical cycling as compared to Arabian Sea. Next Achiba. Lightning strikes have obviously claimed 4,000 people in Odisha in the last 10 years or 11 years. State government has planned now. जोड़े तमे सुनिथवा कि ताଳ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବା ଦେ ହାଭ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ इवन आम कह अन सीजनाल रेन को डिक्लेयर कर तेणुक पाम ट्री जमती लिखा है कि 1.9 मिलियन पाम ट्रीज that would be planted 4 palm tree will be planted near the boundary of each forest block then interdepartmental collaboration रहिबो forest environment agriculture को हमें resilient करवा then हमें आउ कौन करछि फॉर एग्जांपल से कहछि एटा कोन Gratia for the lightning details for the what reduction of lightning 4 lakhs compensation per family को दिया छिबो lightning declared as a state disaster बोली declared करा गला तो ये सब हमें लिखि परिबो आ व्यतीत अवेयरनेस कथा भी तुम लिखिबो कि अवेयरनेस बहुत जरूरी क्लाइमेट चेंज जो द्वारा अवेयरनेस नहले हबो नाही टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देखो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन और किछि ने ओनली हमें एमडी रो कथा को सुनि कथा मानि अछि अब करे नहीं नेक्स्ट व्हाट आर द की फैक्टर्स फॉर इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट ये तो समझते जानि छ ओशन करंट को कोन हेता है ओशन करंट साधारणतः जदि हम कहबा ओशन करंट को प्राइमरी फोर्स के विंड दैट कुड बी द ट्रेड विंड देखो ओशन करंट जदि तुम देखियो एथरे गोटे मैप रहिबा दरकार ओशन रो गोटे मैप ड्रा कर दो ओशन करंट रो हला एटी ड्रा भी हिति देखो तो प्राइमरी फैक्टर्स कोन ना प्राइमरी फैक्टर ओशन करंट रो मु जदि एटी डिस्कस कर देबी तो प्राइमरी फैक्टर होची विंड फास्ट होची विंड तापर आसीबो टेम्परेचर तापर आसीबो सैलिनिटी तापर आसीबो कोरिलिस फोर्स ताले टेम्परेचर सैलिनिटी कोरिलिस फोर्स विंड प्रेशर then pressure अर्थात लो प्रेशर हाई प्रेशर all these factors ये even the shape of the coast कथा नहीं जाओ so these factors even mid oceanic रीच भी कथा नहीं जाओ they actually shape तो number of factors comes together ये सब जक आसी जाए तो तुमको आंसर जे तुम लिखुछ जेमति विंड कथा लिखा है ग्रेविटी भी गोटे कहि परियो कोरिलिस फोर्स अछि सोलार इन्सुलेशन जोटा मु कहली सेटा भी ही परियो काना टेम्परेचर सैलिनिटी डेंसिटी ये सब फैक्टर्स लिखिया परियो वाटर डेंसिटी कथा लिखिया परियो तुमको बिकॉज at the end of the day na water needs gradient water को gradient नहले flow करिवनी for example गोटे example देखि देउची this is the equator 0 degree this would be 23 and half this is what subtropical high pressure that means water will sink here water कोन करिवो sink करिवो as being the low pressure equator region the water volume will be more and right again here is subpolar low pressure the water volume will be more and the side of water volume अधिक मझिरो water volume कम that is where the current will flow to this region
ocean current. So likewise, for the flow of the ocean current or development, we need the water gradient. Water gradient, unless and until the water gradient is not developing, that would not lead to the what development of ocean. Correct, everyone. So that is why. And current को shape करिबारे किए help करे, ताको alignment करिबारे किए help करे. That would be wind pattern, that would be shape of the coast, that would be mid oceanic reach. ये सब factors ताको align करे, माने तार direction को change कराए. So these would be the factors है जो. बाकी तार impact को तो जो कोची desert होची कौन होची से this would be different. And 15 number question. डेमोग्राफिक विंटर बहुत थोड़ा मैं डिस्कस करछे. डेमोग्राफिक विंटर से कथा अर्थात ओल्ड एज पॉपुलेशन कथा. डेमोग्राफिक विंटर है जो समस्त बहुत डिस्कस करछे हम बहुत थोड़ा डिस्कस करबानी एवरीवन आ कोन कहउछ डेमोग्राफिक विंटर आउट डिस्कस करबा की नो सर ठीक अछि 16 गस देखो जे एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ डिप्रेशन इंड्यूस्ड रेनफॉल इन ओडिशा डिसेंबर एबे जोटा है हमर जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट काली भी मु तमरो जो टेलीग्राम चैनल रे देइथली क्वेश्चन हला आउ जो मैंने भी फ्री चाहूँ कि डेली आंसर राइटिंग पठाया पे मु चेक कर देबी जॉइन ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल देयर यू विल हैव द फ्री कॉपी चेकिंग राइट जाबियो देन हम जदि हम डिस्कस करिबा ये दिस बट एथरे हम जे देखिबा कि डिस्कस से कहूँ कजेस कौन देखो कजेस कौन ओडिशा रे जो रेनफॉल है एबे देखिबो जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेयर करके नेचुरल कैलामिटी रे डिक्लेयर कर देले इट्स a natural disaster. This is because of what depression. This is because of what depression. ये because of low pressure. This is because of low pressure. Because of what low pressure जो एमती डेवलप है. Because of low pressure. This one is because of low pressure जो है. Back to back low pressure that caused during this time of harvest even the crop was standing on the field. Crop ta kon thila standing thila on the field. Back to back low pressure has caused even that didn't uh, but give the farmers a chance to collect the crop from the field. And basically same and adhika suffer ହେଇଛନ୍ତି those peoples are doing harvestment manually ଯୋଉମାନେ mechanically harvest କରୁଛନ୍ତି the machine ତାକୁ ଘଣ୍ଟାରେ କାଟିକି ସଫା କରିଦବ. So basically ମୁଁ ଦେଖିଲି କି those peoples have suffered more due to the what manual harvestation process. So କୋଉଠି ନା କୋଉଠି we need to mechanize the farms and the connectivity to the farms माने बिल जाए खेती जाए एटलिस्ट गाड़ीटा जाई परथो अदरवाइज ताको बोही के मुंडरे आनिबा दैट इज आल्सो ए डिफिकल्ट राइट. सो वी नीड फार्म पाई कनेक्टिविटी दरकार सी जाए एटलिस्ट गाड़ीटे जाई परुथबो प्लस मेकानाइजेशन ऑफ फार्मिंग प्लस प्रॉपर प्रेडिक्शन ऑफ रेनफॉल प्लस वेल ड्रेनेज सिस्टम को रखा ताकि बिल रे पानीटा जेमति जल्दी सुखी जिवो ये सब को कोठी न कोठी इंप्रूव करे पड़िबो. ता व्यतीत मु कहतली कथा कि जो माने चाष करूछन से माने निज क्रॉप को कोन करियो दरकार your crop must be insured. केमिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ताधरे तमे इंश्योर करियो दरकार कि एटलीस्ट यदि तमरो वर्षारे खेती जाउची you have insured your crop and you will get the insurance तुमको पाइजो. So because of the meteorological factor जो ये जो rainfall हेइथिला right. So that was the so I mean crop damage हेची 6.6 lakh farmers suffered from the losses जो थर कि इवन मु तुमको बहुत थोड़ा डिस्कस करी छे हमें डिफरेंट ग्रुप्स रे इवन द क्लासरूम रे एटलीस्ट 5 पीपल्स हैव डाइड द फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड because they have taken the loan for the agriculture and the cultivation and once in a year they do the agriculture. So if that get what failed then obviously that would be like a lightning on their head. So that obviously makes them very depressed and more than 5 people have this disaster has claimed the life of more than 5 people, particularly Kendrapada, Nayagad, this region. The financial compensation of 291 crores is been given, allocate कराइछि. ये सब हमें देखि परियो इंफ्रास्ट्रक्चर पई जोटा मु कहली ओडिशा गवर्नमेंट कहचंती के प्रत्येक फैमिली को कंपेंसेशन दिया जिवो ताको नेचुरल कैलामिटीज बोली डिस्कस डिक्लेयर करले सीएम माजी करचंती राइट. सो होप के दिस विल कम आउट इन फेवर ऑफ द फार्मर. बाकी देखो इथे अब डिस्कस करे नहीं कि हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इस वे फॉरवर्ड रे मु तुमको कहि दिछि अर्ली वार्निंग सिस्टम कहिछि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दरकार अवेयरनेस इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार मेकानाइजेशन ऑफ फार्मिंग दरकार इंश्योरेंस मु कहली फार्मर्स मन इंश्योरेंस करिया दरकार ये सब कले ही जाय कि ठीक हो. देन
explain the concept of humidity and dew point. How does they influence the weather pattern and the human comfort, particularly in the coastal region of like Odisha? The humidity is what? Simple, the water vapor से थोड़ा water टा liquid form रे था, gaseous form को असली हमें ताको कोचे vapor, ताको हमें कौन कोचे vapor, and that vapor presence को vapor को मध्य कोचे humidity. The humidity is what? The water vapor, the gaseous form of water in atmosphere को हमें humidity कोचे. Dew point what? Temperature at V is water saturated. Water saturate करे और condensation होता है. Dew point माने जो थे condensation होता है. Simple हमें कौन कहवा? Condensation happens. The point, the temperature at which condensation happens, that is the dew point. Now, say koichi, how does they influence the weather pattern and human discomfort? Obviously, the humidity body jibo, you will be feel discomfort. Kana humidity body temperature body तुमको sticky लागिवो, भल लागिवो नहीं. जेमती खरा दिन आसले भी धीरे धीरे we are approaching towards हम तो एठी कोन लोक बाकी जगह विंटर फील करबे हमरो जेमती फेब्रुआरी जो we will feel the summer. ताद्वारा कौन हम कि स्टिकीनेस आसीजो, इंक्रीज ह्यूमिडिटी बढ़िले दैट वुड बी डिस्कम्फर्ट, हमको बहुत माने बेकार लागिवो, कंफर्ट लागिवो नाही कोस्टल रीजन रे खास करके. वेदर पैटर्न आउ जदी ह्यूमिडिटी 100% हेगिले कोन हबो, प्रेसिपिटेशन हबो, सैचुरेटेड हेजिवो, साइक्लोन हबारे मध्ये हेल्प करथाय, टर्नाडो हबारे हेल्प करथाय, रेनफॉल हबारे हेल्प करथाय ह्यूमिडिटी, राइट. अच्छा, ड्यू पॉइंट हेले कोन हबो, वर्षा हबो, ड्यू पॉइंट हेले कोन हबो, वर्षा हबो. तो बेसिकली आम देखे जमी ह्यूमिडिटी डेटा ओडिशा ये तुम देख एक्सपीरियंस ओडिशा रे बहुत ह्यूमिडिटी था ना, एवरेज बहुत ह्यूमिडिटी था आम कोस्टल रीजन रे. देन व्हाट इज अर्बन हीट, समस्ते जानछ अर्बन हीट आइलैंड अर्थात कोन हीट आइलैंड, जमती आइलैंड कोन मझरे लैंड चारिपटी वाटर थाए सेमती हीट आइलैंड अर्थात भाव लेट्स से फॉर एग्जांपल ये गोटे एरिया अच्छी ये हैदराबाद अच्छी, हैदराबाद टेम्परेचर इज लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस, आखपाख एरिया हूँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, ताले ये पूरा एरिया 35 मझे गोटे छोट एरिया जार टेम्परेचर हूँ 40, ताले हैदराबाद इज द हीट आइलैंड. चारिपटे कौन कूल एयर, दैट इज व्हाई दिस इज द हीट आइलैंड कॉन्सेप्ट. लाइक फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कौन होता है हीट आइलैंड है बेले भुवनेश्वर आखपाख आम कह गाँ गहली देते अच्छी ये जो पूरा रीजन रे कूल एयर होची, सो दिस विल बी हीट आइलैंड रो कांसेप्ट हम देखा जो सराउंडिंग रूरल एरिया रे कौन टेम्परेचर कम थाए बट अर्बन एरिया रे टेम्परेचर अधिक थाए, दिस इज द हीट आइलैंड ना. हीट आइलैंड आप देखिए तो से क्वेश्चन कौन कोई चीज क्वेश्चन कौन होला, व्हाट इज एक्सप्लेन द फैक्टर. अच्छा, फैक्टर्स कौन हीट आइलैंड पे फैक्टर्स कौन, हीट आइलैंड पे फैक्टर होची कंक्रीट, फर्स्ट होची कंक्रीट, सेकंड होची अर्बन कैनियन, फर्स्ट होची कौन कंक्रीट, व्हाट देयर वुड बी कंक्रीट, देन अर्बन कैनियन कहले बड़ बड़ बिल्डिंग जो जाउची, भाबो ए गोटे बिल्डिंग हेगला बहुत बड़, एठी गोटे बिल्डिंग हेगला मझरे रास्ता होची गाड़ी जाउची, so that will be there, right. So that आम जदि कहबा केमिति अर्बन कैनियन सॉरी, तो अर्बन कैनियन हेगला कंक्रीट हेगला, कंक्रीट जंगल जहां तुम कहि परिबो, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हेगला, वेहिकुलर पॉल्यूशन हेगला, फॉर एग्जांपल मुके भी वेहिकुलर पॉल्यूशन हेगला, अर्बनाइजेशन कथा नहीं परिबो, पॉल्यूशन कथा नहीं परिबो. तो दिस आर द फैक्टर्स हम कहबा. समटाइम्स आउ कोन हिथे ना हीट आइलैंड सबर रीजन होची मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर डेवलप हेले भी होता है. तो बेसिकली अर्बन कैनियन, कंक्रीट जंगल, वेहिकुलर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट आमे मध्ये कहबा के रेडी तादर आमे कोन करूचे फैक्टरीज मध्ये तमे कहि परिबो. तो बेसिकली इथि पे होता है. आउ नेचुरल वेजिटेशन नहीं तो अर्बन क्लाइमेट आमे कहबा इन्फ्लुएंस ही जाउची. देन सिग्निफिकेंस ऑफ द ओडिशा मिनरल्स रिसोर्स, देखो ओडिशा रे मिनरल रिसोर्स से कुछ एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनरल रिसोर्स इन ड्राइविंग द स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ये वर्तमान तुम देखियो मिनरल्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. चैलेंजेस से कुछ मिनरल्स केमती इंडस्ट्री को सपोर्ट करूची तार चैलेंजेस केते. ऑब्वियसली आम समझते जानते ओडिशा इज द सेकंड हाईएस्ट मिनरल्स, आयरन रो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इवन स्टील आयरन ओर प्रोडक्शन रे 1 प्लस आयरन प्रोडक्शन रे भी से नंबर 1, स्टील आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन रे भी नंबर 1. कोल हमारा रैंक केते सेकंड, बॉक्साइट रैंक केते 1, मैंगनीज 1, क्रोमाइट 1, आउ कोन रहिला ओडिशा आउ कोथरे 1 अछि, क्रोमाइट 1,
bauxite 1 ଆଉ କୋଉଥିରେ 1 ଅଛି iron 2 coal 2 କଣ ଥିଲା manganese 1 राइट तो ये सब जति आम कह से कहूँ जमी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल ओडिशा वर्तमान इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील दैट इज वाई तो ये तुम लिखिपर कि ओडिशा रे आम जो मिनरल्स रिसोर्स अच्छे बोली इंडस्ट्रियल ग्रोथ होची ना इंडस्ट्री जदि आम देखा इंडस्ट्री आम जीडीपी रे केते परसेंट शेयर कर 30 समथिंग करुच्ची बोधे 33 और समथिंग करुच्ची कहना सर्विस सेक्टर तो सब अधिक कर चेक करदेव केते अच्छी केते करुच्ची एनीवन जदि हम देखा ठीक अच्छे ताकि देखीदेव के परसेंट करुच्ची तो सेठी से कलाहांटी अच्छी जमी तुम ये देखा कौन आलुमिनियम इंडस्ट्री अच्छी कोल तालचेर होगला तुम आयरन कथा नहीं जो पारादीप फर्टिलाइजर अच्छी तुम पारादीप एसआर अच्छी एसआर स्टील अच्छी देन आम टाटा नगर कथा नहीं जो कौटी टाटा टाटा कौन दैट इज टाटा अनुगुल भी अच्छी टाटा नगर जोटा आम जाजपुर अच्छी कलिंगनगर जोटा सेठी अच्छी प्लस भूषण स्टील प्लांट कथा कहीपर ये समस्त अच्छा जमी वेदांत कथा कहीपर आलुमिनियम वेदांत कथा नहीं जाओ तो ये समस्त कथा तुम मेंशन कर कि दीज आर द राइट लास्ट क्वेश्चन को आसवा 20 डिस्कस द ओडिशा's diverse geographical features shaping the economic and cultural development इकोनॉमी से कही हाइलाइट्स द एग्जांपल फ्रॉम द स्टेट्स रिवर्स प्लेटू एक्सेट्रा देखो प्रथम कथा हूँ ओडिशार डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर जदि हम कहवा शेपिंग इन इकोनॉमी एंड कल्चरल डेवलपमेंट जिते कहूचे देखो फॉर एग्जांपल ओडिशा हम कहवा कि कोस्टल इकोनॉमी एंड कल्चर दैट इज डिपेंड अपॉन द लैंड कौन प्लेन कोस्टल एरिया सेमती जिते ट्राइबल कल्चर ट्राइबल इकोनॉमी हिली रीजन सेमती जिते वेस्टर्न साइड को जाऊँ वेस्टर्न रोलिंग प्लेटू एंड वेस्टर्न कल्चर सेमती आम कहवा एपटे जी ट्राइबल कल्चर सांताली ये सब मयूरभंज ये देखा दिस इज बिकज ऑफ द व्हाट जियोग्राफिकल फीचर राइट जमी आम रिवर्स होगा प्लेटू होगा तो ये क्वेश्चन को शायद एड्रेस कर तो ये पूरा